Stressing out about filing your income tax for the first time as a salaried employee? Don't worry, you're not the only one. Did you know even the great Albert Einstein had trouble understanding taxes? He even said that understanding income tax is the hardest thing in the world. Well, we'll do our very best to make it simple for you. इस वीडियो में हम आपको सारे essential income tax terms briefly समझाएंगे for an easy tax filing experience. The first one on this list is the previous year. The previous year, also known as the financial year, is the one that precedes the assessment year. Assessment year is the year that follows the previous year during which you will assess and file your returns. For example, if you file your taxes on the 15th of July this year, then your previous year will be 2022 to 23 and the assessment year will be 2023 to 24. ग्रोस टोटल इनकम में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपकी सैलरी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस, बेटिंग ऑफ एनी नेचर, इनकम फ्रॉम स्टॉक ट्रेडिंग, डिविडेंड्स, इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स एंड सो ऑन। आईटी डिपार्टमेंट कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस के अंडर डिडक्शंस अलाउ करती है ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए जैसे कि house rent allowance, section 80 deductions on health insurance, life insurance, ELSS, etc. For example, if you've taken a loan to pay for the higher education of either yourself, your spouse or your children under section 80E, you will be able to get a tax deduction on the interest that you pay on the education loan, thereby reducing your total taxable income. The income that you get after you subtract the deductions from your gross total income is known as a net taxable income. इस इनकम पे आपको टैक्स भरना होगा। आपने काफ़ी बार TDS का नाम सुना होगा। कुछ पेमेंट्स आप तक पहुंचने से पहले ही टैक्स डिडक्ट होकर आती हैं। इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या TDS कहते हैं। सैलरी, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, कंसल्टेशन फीस, रेंट पेमेंट एटसेट्रा पे इनकम टैक्स एक्ट के तहत TDS लगता है। ITR is a process of reporting your income and the subsequent taxes to the IT department. There are various forms to file your ITR as per your applicability. फॉर्म 16 वो फॉर्म है जो आपका एम्प्लॉयर इशू करता है और ये आपके ITR फाइलिंग प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके इनकम टैक्स की सारी जानकारी मौजूद होती है। Surcharge only applies to you if you're a high net worth individual and fall under a higher income tax slab. In this case, you may be liable to pay an additional tax apart from the applicable tax rate. This is also known as tax on tax. For instance, if your income lies between 50 lakhs to 1 crore, you will be liable to pay a surcharge that's 10% of your income tax. और अब जब आपने ये सारे important terms समझ लिए हैं, तो आप seamlessly अपना ITR फाइल कर सकते हैं। For more interesting content on income tax, stay tuned.